अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना काम अभी। कोई प्रीवियस से क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं आप। जी जी पूछिए। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी नाउ? आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, राइट। ओके, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए फ्रॉम प्रीवियस थिंग्स दैट वी स्टडीड। इफ देयर इज एनी प्लीज गो अहेड। So I assume there is none. You can see my screen? Okay, so we will start with another example. So we have been talking about constructing the confidence intervals. We have seen a number of examples in that regard. आज हम बात करेंगे estimating a mean difference of paired data. So हमने basically proportion, population proportion और population mean के हवाले से confidence interval construction की है अभी तक, और अभी हम बात करने जा रहे हैं एस्टिमेटिंग द मीन डिफरेंस। ना हमने प्रोपोर्शन को डिस्कस किया था, प्रोपोर्शन के डिफरेंस को देखा था, फिर हमने मीन के बारे में बात की थी, और अभी हम मीन डिफरेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड दैट टू ऑन पेयर्ड डेटा। सो डू यू पीपल नो व्हाट इज पेयर्ड डेटा? Okay, so we will discuss this now. Okay, so this particular example is taken from the Twins Day in Twinsburg, Ohio, which was initiated in 1976 in that particular location, where जो ट्विंस डे है वहाँ मनाया जाता है, जहाँ ट्विंस इकट्ठे होते हैं, डिफरेंट थिंग्स आर डन। सो इस केस में पर्टिकुलर जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, दैट इज द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस इज द एजुकेशन लेवल ऑफ ट्विंस. So this data is basically taken from that one twins day. Okay. Acha. So what we want to do is we want to treat the two sets of values simultaneously when we talk about paired data. तो paired data एक ऐसा data होता है जिसके अंदर हम दो sets of values को simultaneously treat करना चाहते हैं. So basically इसका मतलब जैसे ये है कि अगर हम ट्विंस की बात कर रहे हैं, तो ट्विंस के बारे में, एक ट्विन के बारे में जो हम चीज स्टडी कर रहे हैं, वही चीज दूसरे ट्विन के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं. सो वी आर बेसिकली हैविंग टू सेट्स ऑफ वैल्यूज, one about one of the twins and the other about the other of the twins, and we are talking about them simultaneously, राइट. ये पेयर्ड वैल्यूज की एग्जांपल जो है वो और सिचुएशंस में भी अराइज हो सकती है. मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं वी नीड टू टेक मेजरमेंट्स कलेक्टेड ऑन द सेम इंडिविजुअल. सो ऐसी कौन सी मिसालें हो सकती हैं जब हम एक ही इंडिविजुअल के ऊपर पेयर्ड डेटा की एग्जांपल ले सकें? सो दैट इज फॉर एग्जांपल कि आप हैंड राइटिंग को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप एक पर्सन से कहते हैं कि वो पहले अपने
राइट हैंड से और फिर अपने लेफ्ट हैंड से वो चीज़ लिख के दिखाए. सो यू विल बी लाइक टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन द पर्सन uses his primary or the secondary hand for writing. सिमिलर एग्जाम्पल कुड बी कि आप एक पर्सन के लेफ्ट और राइट हैंड की फिंगर्स की लेंथ को मेजर करते हैं, राइट. सो दिस इज अगेन समथिंग दैट यू आर परफॉर्मिंग on the same individual. And another third example is, for example, here is कि आप एक इंडिविजुअल के ऊपर किसी पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन के इफेक्ट को नोटिस करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि you will take some measurements before the individual takes the medicine, and then you will be taking some measurements when once the individual has taken that medicine. Okay. Another way the paired values could be studies for example, when we are taking measurements collected on matched individuals. So it is not the example when we are talking about the same individual, but the matched individual. For example, talking about twins. के ऊपर कोई स्टडी कर रहे हैं तो हम मैच्ड इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं where there are two different entities involved in any way. Even it could be about two identical candles. So for example, you could be like talking about the kind of wax being used in those or something like that. And even it could be the possibility or probability or the similarity that a grandson inherits from the. Just जी अब्दुल रहमान. So you have told them in the group now. लिंक तो ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में शेयर कर दिया बेटा. जी. बेटा बेटा मेरी क्लास 4 बजे नहीं है, आपकी दूसरी क्लास 4 बजे होगी. अभी मैं अब्दुल रहमान से फोन पे बात कर रहा था. जरा जरा मैसेज पढ़ें उसका, उसने मैसेज क्या किया है. यू पीपल क्रिएट अ मैस आउट ऑफ नथिंग. That's for the other class that is ongoing with the evening. Okay. So there are different situations when these kind of paired values arise, and those can be studied simultaneously. Okay. And the variable, for example, is the difference of measurements within the pair. तो जब हम आम तौर पे variable को study करते हैं paired values के case में, so that is usually the difference of measurements within the pairs. So that could be the difference in, for example, mean in this case. So in this particular example, the research question that we are having is, what is the average difference between older twins and younger twins self-reported education? कि जो ओल्डर ट्विन है जो एजुकेशन लेवल उसने बताया है, और जो यंगर ट्विन है जो एजुकेशन लेवल उसने बताया है, उसमें एवरेज डिफरेंस क्या है. So this is the research question that we have currently. So it's basically based on this analogy that the elder twin might think that I am older and more motivated and I have more education, and the younger twin might have an opinion that I am younger and I face less pressure and I have more education. Now, what is the population?
all identical twins. So basically, twins have different types. One of the most common types is the identical twins. The identical twins are basically the ones which are basically arising from the same egg fertilization. So identical twins के ऊपर ये जो particular study है वो perform की गई है और इसमें हमारी जो population है वो all identical twins पर मुश्तमिल है. And the parameter of interest is the population mean difference of self-reported education level. Population mean difference of self-reported education level, right? So we are basically talking about all identical twins as population, and we are interested in studying the mean difference of self-reported education level. यानी older twin ने जो report किया है education level और जो younger twin ने education level report किया है उनके difference के mean को हम यहाँ पे as a parameter of interest ले रहे हैं. Okay. So that is basically simply difference is equal to older's self-reported education level minus younger's self-reported education level, right? और यहाँ पे basically हम mean के साथ ये D जो लगा रहे हैं as subscript, that is basically indicating the difference. Okay. And the task that we have at our hand is we need to construct a 95% confidence interval for the mean difference of self-reported education for a set of identical twins. So हमें 95% confidence interval construct करना है इस parameter of interest के ऊपर जो कि है mean difference of self-reported education level. So here is a clip of the data that we are having at our hands. So हमें कुछ यहाँ पे columns नज़र आ रहे हैं, कुछ rows नज़र आ रही हैं जिसमें older twin का education level पहले column में है और फिर younger twin का education level दूसरे column में है और फिर हमने difference यहाँ पे report किया हुआ है, right? So it's basically like in this case the difference is 0. In this case it is 18 minus 16, so it is 2, and in this case it is 13 minus 15, so it is minus 2 because you're basically doing the older minus younger, right? So for all the data which is basically consisting of 340 total observations, 340 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें ओल्डर और यंगर ट्विन के एजुकेशन डिफरेंस को नोट किया गया है. उसका हिस्टोग्राम आपको नज़र आ रहा है. इस हिस्टोग्राम में आप ये देख सकते हैं कि ज़्यादातर केसेस में ओल्डर ट्विन और यंगर ट्विन ने जो एजुकेशनल लेवल रिपोर्ट किया है वो सेम है. So for example, most of the people have reported the education level, the difference of which is primarily 0. So in this case, you can see that 72.1% of the population have reported the education level, the difference of which is 0. So यानी ज़्यादातर identical twins ऐसे हैं जिनका education level same है, right? But based on that, whatever we have got 340 observations, the minimum value that you have got is 3.5 years. मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि इस केस में यंगर ट्विन की एजुकेशन जो है वो 3.5 ईयर्स ज़्यादा है कंपेयर टू ओल्डर ट्विन और द मैक्सिमम डिफरेंस है वो 4 है. इसका मतलब ये है कि इस केस में बेटा अपना सो जो मैक्सिमम डिफरेंस रिपोर्टेड है दैट इज़ 4 years, राइट? सो दैट मीन्स कि ये वो केस है जिस केस में ओल्डर ट्विन का एजुकेशन लेवल 4 years ज़्यादा है यंगर ट्विन से. बट अगेन एज आई सेड द डिफरेंस फॉर द मोस्ट ऑफ दैम इज this is 0 or they are having the same level of education. Now the mean that we get out of these 340 observations, the difference in the mean is the mean of the difference in the values is 0.0838 years. अगर आप इस डेटा को जनरली ऑब्जर्व करें so it is basically pretty normally distributed, right? It's kind of bell shaped, right? Where the data towards the left and the data towards the right and is showing pretty much the same trend. But anyway, the difference in the mean values is 0.0838 years and the standard deviation is 0.7627. So you can see that the mean is pretty low, not far away from the 0. Standard deviation is low, but compared to mean, it is still higher. And now we move on with the further analysis.
So अब हमें करना क्या है, बेसिकली वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल, सो दैट विल ऑब्वियसली स्टार्ट विद द बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस सम मार्जिन ऑफ एरर। हम अपना बेस्ट एस्टिमेट लेंगे और उसमें से मार्जिन ऑफ एरर को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, और वो हमें हमारा इंटरवल कंप्यूट करके दे देगा, राइट। So this is something that you did in the previous example, जिसमें हम मीन को डिस्कस कर रहे थे। तो मीन के केस में हमने देखा था कि मीन के केस में जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और उसके ऊपर मीन की कंपटीशन करते हैं, तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय टी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको अप्लाई करते हैं विद n माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इस केस में चूंकि हम मीन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा कह लें कि बेस्ट एस्टिमेट है, वो बेसिकली जो हमारा सैंपल है उसके अंदर से जो मीन हमने लिया है वो हमारे पास एक्स बार डी है, राइट, जो उसका डिफरेंस जो है प्लस माइनस टी मल्टीप्लायर, और दिस इज आर estimated standard error, which is basically based on the standard deviation from the sample, the difference of the standard deviation in the sample, and it is divided by the square root of n, right? So in this case we say that the t's multiplier comes from a t distribution when with n minus 1 degrees of freedom. I told you last time what do we mean by n minus 1 degrees of freedom, right? So since we need to construct the 95% confidence interval, and the t's values change according to the number of observations that we have in the data set. So if we have, for example, 25 values only, the value for t would be 2.064, and if the value of n is 1000, then the t's values will be 1.962. So its value changes according to the number of observations or number of data points that we have in the data. Okay, so now with mean of 0.084, a little rounded figure, and the standard deviation of 0.76 years. So with n is equal to 340 observations, the t's value would be 1.967. So this is something that you can get from the t's table, right? And now we can basically plug in these values and compute the confidence interval according to the values that we have. So basically the difference in the mean is 0.084 that we have computed from the data set, plus minus t multiplier is 1.967 in case of 340 observations, and the standard deviation is 0.76, and it is divided by the square root of the number of observations in the data set, which are 340. So once you simplify them, you basically get the value of 0.084 plus minus 0.0814, right? And now we need to associate or figure out what it means. तो अगर हम इसको प्लस और माइनस करें तो हमें जो फिगर्स मिलती हैं दैट इज that the range lies between 0.0025 and 0.1652 years. Now the question is, can anybody interpret कि इसका मतलब क्या है? हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि anybody else? Remember, we are not doing any hypothesis test. We are just constructing the confidence interval. G. Okay. Okay, so basically what we have got is the range of reasonable values for our parameter. So what is our parameter of interest? That is the difference in the mean of the self-reported education
level between the same between the identical twins. So we have got a range of reasonable values for our confidence interval, which was basically assumed to be 95%. Okay. Okay, so we can say that with 95% confidence, the population mean difference of older twin. With 95% confidence, the population mean difference of the older twins and younger twins' self reported education is estimated to be between 0.0025 years and 0.1652 years. Last time when we were talking about it, I told you that we should be able to say this thing properly कि हम हमारा मतलब क्या है जब हम यहाँ ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि व्हाट वी हैव द फिगर और द वैल्यूज और द इंटरवल दैट वी हैव गॉट हाउ टू इंटरप्रेट दैट द राइट वे टू इंटरप्रेट और राइट द राइट वे टू से इज that with 95% confidence the population mean difference of the older twins and younger twins self-reported education is estimated to be between this minimum value and that maximum value 0.0025 years and 0.1652 years. Okay, now is there a difference between education levels of the older and younger twins? देखिए ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं एज आई टोल्ड यू कि हम बेसिकली अभी कोई हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ये बता रहा है कि हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन डिफरेंस जो होगा ओल्डर ट्विन और यंगर ट्विन के सेल्फ रिपोर्टेड एजुकेशन लेवल में वो 0.0025 ईयर्स से लेकर 0.1652 ईयर्स तक होगा। सो हम 95% कॉन्फिडेंट हैं ये कहने में, right? It does not mean that we are doing any hypothesis testing. We have just constructed the confidence interval. Now, based on this confidence interval that we have computed or constructed, क्या हम ये कह सकते हैं कि ओल्डर और यंगर ट्विन के एजुकेशन लेवल में फर्क है, या हम ये कहेंगे कि नहीं ओल्डर और यंगर ट्विन के एजुकेशन लेवल में फर्क नहीं है? Okay, so you say yes, there is difference. It's a small difference. Anybody else? Okay, so the difference that we note is okay, we are given some difference, right? And that's obviously not very huge. So we can like further take a question that is there a mean difference between the education level of twins? Is there a mean difference between the education level of twins? So what we need to see is if the education levels are generally equal, the mean difference would be 0. And if the education levels are not equal, the mean difference will not be 0, right? That means we have to look for 0 in the range. Now, is there a 0 in the range? So this is our interval. Is there a 0 in the range of this interval? No, there isn't a 0. अब इस इंटरवल में 0 कब हो सकता था? मिसाल के तौर पे ये इंटरवल किसी नेगेटिव वैल्यू से शुरू होता और किसी पॉजिटिव वैल्यू पे एंड होता, तो हम कहते कि इस इंटरवल के अंदर 0 मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर इसकी वैल्यू -0.0025 होती और मैक्सिमम वैल्यू 0.1652 होती तो हम ये कह सकते थे कि इस इंटरवल के अंदर 0 मौजूद है, right? So that basically gives rise to this question that the difference can be 0 because the 0 is ultimately occurring in the interval and we are 95% confident about that interval. So there is obviously a chance that we have no difference. But in this case, although
The difference is not very huge, but still we cannot say that there is a zero in the confidence interval that we have constructed. So if there is no zero, that means हम ये नहीं कह सकते ये difference neglected है या ये difference नहीं है. There is some difference. Then we obviously have to talk about some assumptions. हमें assumptions के बारे में भी बात करनी है. So we need to assume that we have a simple random sample. हमें आइडेंटिकल ट्विंस का जो सैंपल है हमारे पास, वो हमारे पास एक सिंपल रैंडम सैंपल है. एंड अगेन दिस बेसिकली गोज बैक टू द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन. That was this thing taken care of while the data was being collected? So once we have the data, we are just assuming that, okay, we assume that we have a simple random sample. If it isn't, it will make a difference. Then population of differences is normal, right? हम ये assume करते हैं कि जो डिफरेंसेस की पॉपुलेशन है वो बेसिकली नॉर्मल है, या वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है. या अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात नहीं कर सकते, तो हम एटलीस्ट ये कहेंगे कि वी हैव लार्ज इनफ सैंपल साइज दैट कैन हेल्प बाईपास दिस assumption that the data is normally distributed. और लार्ज इनफ की भी हमने डेफिनेशन की हुई है. लार्ज इनफ की डेफिनेशन हमने क्या की थी कि हमारे पास हर किस्म की आउटकम के हवाले से 10-10 जो रिस्पॉन्सेज हैं वो होने चाहिए, राइट? इन दिस केस सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मीन, सो वी विल बी इंटरेस्टेड इन दैट वी हैव सिंपली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इस केस में हमने ये देखा था कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो नॉर्मल थी. डू यू फील लाइक दैट? हमने यहाँ एक डायग्राम के अंदर देखा था कि जो डिफरेंसेस हैं जिनको हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, दे फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Do people feel that this is a normal distribution? Why do you think that this is a normal distribution? Right. So, norm, जी जी. Okay. Anybody else who want to say anything about it? Okay. So we have talked about this number of times already. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या है कि यानी हम नॉर्मल आम तौर पे जो हमारे इर्द गिर्द फिनोमेनाज होते हैं, हम उनके बारे में ये तवक्को रखते हैं कि वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. एंड अगेन आई हैव टॉक्ड अबाउट इट अ नंबर ऑफ टाइम्स इन द क्लास कि जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों के एग्ज़ाम ग्रेड्स हैं. सो आम तौर पे नॉर्मल जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. ह्यूमंस का एज ग्रुप है, वी एक्सपेक्ट कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ह्यूमंस का एजुकेशन लेवल है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट? वेट है, हाइट है, सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब क्या है कि कुछ वैल्यूज़ बहुत लो होंगी, कुछ वैल्यूज़ बहुत हाई होंगी, और ज़्यादातर वैल्यूज़ मिड रेंज में फॉल करती होंगी, राइट? सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर प्लॉट है ये हमें यही बता रहा है कि कुछ वैल्यूज़ बहुत लो हैं, कुछ वैल्यूज़ बहुत हाई भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वैल्यूज़ towards the center tendency रखती हैं. So that is what a normal distribution is like. जी. Okay. We've allowed some more now. Okay. So now you get what a normal distribution is. Okay, so we assume that the data is normally distributed. So this basically इस example में हमने क्या किया, extension of the one mean confidence interval. हमारी जो पिछली एग्जाम्पल थी वो सिंपली एक मीन के ऊपर थी, यहाँ हम डिफरेंस की बात कर रहे थे. सो वी यूज डिफरेंस वेरिएबल नाउ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग द मीन. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन of the self-reported education of the identical twins? And data need to be paired to calculate a difference variable,
राइट। सो इस एग्जांपल में हमने देखा कि हम पेयर्ड डेटा के ऊपर ये कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे थे, एंड आई होप यू हैव गॉट द आइडिया कि पेयर्ड डेटा से हमारी क्या मुराद है। दैट मीन्स टू मेजरमेंट्स ऑन सेम इंडिविजुअल और टू measurements on similar matched individuals, right? So you're sure about these two cases now? हम इन्हें पेयर्ड डेटा कहते हैं जहां हम सेम इंडिविजुअल की टू मेजरमेंट्स ले रहे हैं या सिमिलर या मैच्ड इंडिविजुअल्स की टू मेजरमेंट्स ले रहे हैं। So do you think that this example was suitable for the demonstration of paired data? Okay, good to hear from you. Okay, then obviously we need to check for zero in the confidence interval, because the presence of zero in the confidence interval basically lead us to an implication that there is no true difference in what we have measured. Okay, so इस एग्जांपल के हवाले से कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो, if you have any questions you can ask now. Okay, so we will pause for 5 minutes and then we will continue from here, right? Okay, ji. Can you hear me now? Okay. So we continue from where we left off. In this second example, we will again be talking about estimating a difference in the population mean with confidence. The difference from the previous example would be कि अब हम independent groups की बात कर रहे होंगे, राइट। पहले हमने पेयर्ड डेटा की बात की थी, काइंड ऑफ आप कह लें डिपेंडेंट ग्रुप जिनको हमने साइमल्टेनियसली स्टडी करना था। अब हम ऐसे दो ग्रुप्स के मीन के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, राइट। एंड यू नीड टू लाइक बी एबल टू अप्रिशिएट कि ये डिफरेंस किस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ यू लाइक लुक एट द प्रीवियस एग्जांपल, तो हम इन दोनों के लाइक रिसर्च क्वेश्चन को कंपेयर करके ये बात बता सकते हैं कि हम उसको पेयर्ड और इसको इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द ओल्डर ट्विन्स एंड यंगर ट्विन्स सेल्फ रिपोर्टेड एजुकेशन, right? What is the average difference between the older twins and younger twins self reported education? हम कह रहे थे कि पेड डेटा है, यहाँ हम ओल्डर ट्विन की बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही यंगर ट्विन की बात भी कर रहे हैं। सो दिस इज अ पेयर्ड डेटा विच विल बी एनालाइज्ड इन टैंडम। Whereas इस एग्जाम्पल में हम ये कह रहे हैं कि कंसिडरिंग मैक्सिकन अमेरिकन adults aged from 18 to 29 living in the United States, do males and females differ significantly in mean body mass index, right? So now I just want you to be able to appreciate the difference between these two kind of questions, कि हम इसको कह रहे हैं कि हम independent groups की study कर रहे हैं, independent groups को study कर रहे हैं। So males are one group, females are the other group, राइट। whereas इस केस में हम ये कह रहे थे कि हम इनको काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहे, हम इन्हें पेयर्ड डेटा समझते हैं कि हम लाइक ऐसी चीज़ों की जो एक ही लाइक इंडिविजुअल के ऊपर या सिमिलर इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो परफॉर्म की गई स्टडीज हैं, राइट। सो कैन यू अप्रिशिएट दिस डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड एंड द इंडिपेंडेंट? सॉरी, no, I didn't share it, and I'm sharing it now. Now you can see it. Okay. Okay. So what I was basically saying is that this is the research question from the previous example. So हम यहाँ इसको कह रहे थे कि ये paired data है, और this is the research question in the current example that we are going to study, और हम इसको कहते हैं कि हम independent group को study कर रहे हैं यहाँ पे. So can you appreciate the difference between the two?
So do you get that these are two different things कि हम उसको paired data क्यों कह रहे हैं और इसको independent groups क्यों treat कर रहे हैं? Because they are, right? So in the previous case obviously हमने इस चीज़ को example से signify किया कि हम paired examples को किस तरीके से लेते हैं और किन को कहते हैं. यहाँ हम males और females की बात कर रहे हैं, so they are not necessarily कि एक मेल के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर फीमेल है जिसको देखा जाएगा. दे आर इंडिपेंडेंटली लाइक बीइंग ट्रीटेड. ठीक. Okay. So the question that we have is that considering Mexican American adults aged between 18 to 29 living in the United States, do males and females differ significantly in mean body mass index? क्या ऐसे मैक्सिकन अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं और उनकी उम्र 18 से 29 साल है, तो क्या उनमें जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनके बॉडी मास इंडेक्स में क्या वाज़ेह फर्क है या नहीं? ओके. So the first thing, as always, is the population of interest. So the population of interest is the Mexican American adults aged between 18 and 29 living in the United States, right? So सारे के सारे मैक्सिकन अमेरिकन अडल्ट जिनकी उम्र 18 से 29 साल है और यूएस में रहते हैं, वो सारे के सारे इसमें विदाउट टारगेट पॉपुलेशन क्वालिफाई करते हैं. The next thing is the parameter of interest. So the parameter of interest is again in the difference of the mean, right? So that is mu1 minus mu2. हम इसको यूं कह देते हैं, जिसमें सपोज हम mu1 से मेल्स के बॉडी मास के इंडेक्स की एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और mu2 से फीमेल्स के बॉडी मास के इंडेक्स की एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? एंड वी यू नो दैट BMI is basically body mass index, which is in terms of kilograms per meter square. So that is basically the muscle mass कि आपका जो बॉडी का टोटल एरिया है उसके हवाले से, किलोग्राम्स के हवाले से और एरिया के हवाले से आपका कितना मसल मास होना चाहिए. सो इट इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर वेट एंड योर हाइट. Okay, so this sample comes from the NHANES data. So this is basically the National Health and Nutrition Examination Survey from the US. So इसके अंदर से ज़ाहिर है सबसे पहले तो डेटा को फिल्टर कर लिया गया. सबसे पहले like you need to filter data based on race. So race की वो आईडी आप सेलेक्ट करेंगे जो मैक्सिकन अमेरिकन को रिप्रेजेंट करती है, और उसके बाद आप इसको एज की बेस पे फिल्टर कर लेंगे. उनमें से सिर्फ वो एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कि जो हमारा टारगेट एज ग्रुप है, which are aged from 18 to 29. So data was filtered to include only Mexican American adults that were between the ages of 18 and 29, right? So you know, for example, if you use pandas, you can do this filtering very simply. आप बहुत आसानी से डेटा फ्रेम के ऊपर से ये सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करके, फिल्टरिंग अप्लाई करके अपना सबसेट ऑफ डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके. Next thing is the variable summary. So the summary statistics tell you that the mean value for males in terms of BMI is 23.57 and that for females is 22.83. And the standard deviation is also like very similar, 6.24 for males and 6.43 for females. The min, the max, and the ends are given. So we have 258 samples for male and 239 samples for females, right? And we know that ये दोनों samples जो है वो independent of each other है, right? So it isn't that कि हमने यहाँ से males का लिया है तो यहीं से males females का डेटा भी लेंगे. They are independently treated here. अच्छा, फिर आपको एक बॉक्स प्लॉट के अंदर समरी नज़र आ रही है इन तमाम की for both groups, for males and females, right? So can anybody like say what do you read from this box plot for the BMI for males and females? Right. Okay, so like yes, you can see the bare summary in the box plot where you see that this is the 25th for the first quartile, the second quartile, and the third quartile. 25% of the data is like below this, 50% of the data, 25 and to between 50% of the data is here, and 50 to 75% data is here, and the beyond that is here.
और इसी तरीके से आपको फीमेल के केस में जो लोअर क्वार्टाइल है वो ज़रा छोटा नज़र आ रहा है, 25 से 50% डेटा, 50 से 75% डेटा, and then you also see some outliers. So if for example we say तो हमें थोड़ा सा बहुत माइनर सा फर्क नज़र आता है 25th और द फर्स्ट क्वार्टाइल में, 25th परसेंटाइल में। जो 50% डेटा है या मीडियन है डेटा का, उसमें थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है, और अगेन हाइट में फिर आप 75% पे जाएँ तो थोड़ा माइनर डिफरेंस वहाँ पे भी आपको नज़र आता है। बट ओवरऑल इफ़ वी टॉक अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डेटा, probably we can say that there isn't any huge difference. कोई बहुत बड़ा फ़र्क हमें इसमें नज़र बहरहाल नहीं आता, and we have pretty much the similar sample size for both males and females of 258 and 239 respectively. Okay. Now we talk about the sampling distribution of this difference in two sample means, right? Now, one is the distribution of males and the other is the distribution of BMI for females, right? So ये दो different distributions हमारे सामने होंगी। हम इनके histograms मिसाल के तौर पे बना के देख सकते हैं कि males का BMI कैसे distributed है और females का BMI कैसे distributed है, right? Now we are talking about the distribution of the difference in the two population means, right? So if model for both populations of responses are approximately normal, or the sample size are both large enough, distribution of the difference in sample means is also approximately normal. Do you get this sentence? ये फिक्रा आपको समझ आया? If you get the sentence, good enough. If you don't, you can ask what is confusing. Read this sentence and just let me know if you don't get it. इसमें बेसिकली हमने ये कहा है कि अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास मेल्स का डेटा है और फीमेल्स का डेटा है, ठीक है, और अगर वो दोनों अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो फिर या फिर ये कि सैंपल साइज जो है वो लार्ज इनफ है, तो फिर जो उन दोनों का डिफरेंस होगा मीन का, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आएगा हमें, हम ये कह रहे हैं। So it's basically like this, that if we have mu1 minus mu2, the difference in the means of both populations, that should follow a normal distribution like this. हम normal distribution का कर्व इस तरीके से बनाते हैं जिसको हम बेल शेप कह देते हैं, right? So that basically should encompass all possible values of difference in sample means, कि जो हम दोनों samples के mean का difference ले रहे हैं वो इसी किस्म की shape के अंदर enclosed होना चाहिए, right? Okay. Now, and the next thing is to compute, to be able to compute the standard error, right? So standard error जो हम यहाँ पे ले रहे हैं दोनों का, what we do is we take the variance, the square of the variance divided by the number of observations for males, plus the variance for the female side of the data divided by the number of samples in the female, and we take the square root of the whole, right? And since we do not know the exact deviation, हमें exact deviation जो है population की वो मालूम नहीं है, तो हम ये deviation simply इस्तेमाल करते हैं या variance इस्तेमाल करते हैं simply जो हमारे sample का है। So हम ज़ाहिर है अपने sample के अंदर से variance या standard deviation calculate कर सकते हैं, लेकिन हमें चूँकि जो पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन एग्जिस्ट करती है वो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लिहाजा हम सिंपली स्टैंडर्ड एरर को यहाँ एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर के तौर पे लिख लेते हैं। वी टेक द measure that is available from the sample in this case, right? So that is basically S1 squared over N1, which is the variance for males divided by the number of observations in the males group, and plus we add the same thing for the females group. Now again, we just repeat what confidence interval usually looks like. That is basically our best estimate plus minus the margin of error. And the best estimate, as we have always said, is the unbiased point estimate,
right? And the margin of error is basically a few estimated standard errors, where a few basically is the multiplier for appropriate distribution based on desired confidence level and sample design, right? So in this case, we need 95% confidence level, और that would also mean कि अगर हम hypothesis testing में जाएंगे तो हम 0.05 significance level की बात कर रहे हैं, right? Okay, now we can talk about like जब हम इन इस estimation की तरफ जाते हैं तो हमारे पास दो approaches हैं, एक है pooled approach और एक है unpooled approach, right? अच्छा, pooled approach और unpooled approach में हम कैसे differentiate करते हैं? The variance of the two populations are assumed to be equal. अगर दोनों populations, अब हम दो independent populations की बात कर रहे हैं, अगर दोनों इंडिपेंडेंट पॉपुलेशंस का वेरिएंस जो है, अगर हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक वो वेरिएंस बराबर है, तो हम पूल्ड अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम unpooled approach इस्तेमाल करेंगे. So we say that if like we have two populations and the variance for one population is roughly equal to the variance for the second population, we can use the pooled approach. And if that assumption does not hold, which obviously basically we don't know whether it is equal or not, लेकिन generally speaking अगर हमें पता है तो हम इसको pooled approach में ले जाएंगे. Otherwise अगर ये assumption hold नहीं करती, the assumption of equal variance is dropped, so we are basically following the unpooled approach. And in the forthcoming slides we will be explaining how do we take the pooled approach and how do we take the unpooled approach. सो फॉर द मोमेंट हम ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारी पॉपुलेशन में जो डिविएशन या वेरिएंस है वो क्या है, राइट? सो वी बेसिकली फर्स्ट गो विद द अनपूल्ड अप्रोच. ठीक है, हम अनपूल्ड अप्रोच को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. सो अगेन बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल. और हम इस केस में अनपूल्ड के केस में इसको कैसे करेंगे? बेसिक फॉर्मूला हमारा वही है दैट वी हैव आवर बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस द मार्जिन ऑफ error, right? And what is our best estimate? That is the difference in the sample means. हमारे पास सैंपल है और उनके मीन्स है, सो हमारे पास मेल्स का बीएमआई का मीन है और फीमेल्स का बीएमआई का मीन्स है. हम उनको x1 बार और x2 बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. सो द डिफरेंस विल बी x1 बार माइनस x2 bar plus minus a few. So we have some t's multipliers. So whenever we talk about means, we go with students t distribution. So हम t distribution के हवाले से t multiplier यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास basically s1 squared over n1 plus s2 squared over n2 होगा, right? Okay. नाउ टी जो यहाँ पे बेसिकली सैम्पल्स उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और साइजेस के हवाले से और डिग्री ऑफ फ्रीडम के हवाले से टी स्टार की कंपटीशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बट हम एक कंजर्वेटिव अंदाज में एक कह लें कि एक परफेक्चुअल अंदाज में इसके लिए जो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है वो यूज़ कर लेंगे, जिसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको बेसिकली इसके ऊपर मुहैया कर लेते हैं, मिनिमम ऑफ n1 माइनस वन एंड min and n2 minus 1. हम इसके मिनिमम के ऊपर इसको गेज कर लेते हैं. So we just fix it here instead of going with the computation with any kind of approximation. On the other hand, अगर हम pooled approach की तरफ जाएं, pooled approach के अंदर basically again we have to do the same thing. हमारे पास जो difference in the sample means है वो वही है x1 bar minus x2 bar, right? Plus minus we have to go with a few and the standard error here, right? So यहाँ पे basically आपको बेसिकली क्या करना है कि आप जो पूल्ड अप्रोच है उसके अंदर पूल्ड अप्रोच बेसिकली कौन सी थी, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि दोनों का वेरिएंस एक जैसा है. सो व्हाट वी डू इज इन दिस केस वी कंप्यूट इट लाइक n1 minus 1 into the variance for that plus n2 minus 1 into variance of this divided by the sum of both, right? So that becomes basically n1 plus n2 minus 2, right? And then we divide it, then we multiply it with 1 over n square plus 1 over n, sorry, 1 over n1 plus 1 over n2, right? And the t multiplier comes from the t distribution with n1 plus n2 minus 2 degree of freedom. And again, this approach can be used if we assume the population variances are equal. Now, the hazy thing here is the usage of this formula here, right? For t star, this is simple. ये part जो है वो simple है, but this, right? We are saying that we are not going into the depth of this. We are just
यूजिंग इट परफेक्चुअली. एंड सिमिलरली जो पूल्ड अप्रोच के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, हम उसकी भी डेप्थ में नहीं जा रहे, वी आर जस्ट यूजिंग इट इफ वी आर यूजिंग द पूल्ड अप्रोच, राइट. So the 95% confidence interval in this case, considering Mexican American adults aged 18 to 29 living in the United States, do males and females differ significantly in the mean body mass index? So the first thing in terms of assumption would be the normality assumptions, that models for both population of responses are approximately normal or at least they are large enough, right? So हम ये assume करते हैं कि जो दोनों males और females की populations हैं जिसके samples हमारे पास 200 plus हैं दोनों के केस में, वो normal distribution को follow करते हैं, या at least they are large enough to assume that they are the representative samples. So this is an illustration of how the samples look like, right? So for example, this one is for males and this one is for females, the distribution. So if you and then you also have the QQ plots, which should be like on the diagonal if they are like normally distributed, but instead of, like, again, since we haven't really done a lot with QQ plots, so we just focus on the histograms. अगर आप इन histograms को देखें, so you see the histogram for the males on top and the histogram for the males females population distribution for BMI on the bottom. So what do you think about the distribution? आपके ख्याल में इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप क्या कहेंगे? How is this data distributed? Is it a normal distribution? Is it skewed or what? Okay. Do you think both of these data are right skewed? Okay. ओके, यस, अपेरेंटली हम ये देखकर ये कह सकते हैं कि डेटा थोड़ा राइट स्क्यूड है, बट ऑब्वियसली वी वोंट बी सेइंग दैट इट इज एक्सट्रीमली स्क्यूड, बट इट इज समवट राइट स्क्यूड. एंड पर्टिकुलरली अगर आप फीमेल्स डेटा को देखें तो दैट लुक्स अ लिटिल मोर राइट स्क्यूड देन दी males data, right? Male data भी थोड़ा right skewed है, but that is usually not seeing the same heights as compared to the females data. So in this case, we see that there is this region where the height really takes a height. So we have slight right skew in the males data, and we have slightly more right skew in the females data. Now that apparently is not a great sign for us, राइट. इसको हम कोई बहुत अच्छा साइन अब नहीं समझ सकते, ये कह सकते. बट what we do is that we the models for both populations should be normally distributed, so both distributions have a slight moderate right skew, but the large sample sizes let us apply these सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड कंटिन्यू. सो बेसिकली सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली क्या अप्लाई करता है कि जैसे जैसे आप रैंडम सैंपल्स पिक करते जाते हैं फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन, तो और आप उनके लाइक मीन को और उनके वेरिएंस को कंप्यूट करते हैं, इट अप्रोचेस दैट पर्टिकुलर सेंट्रलिटी. सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ओके, दिस इज अ स्मॉल सैंपल, and if we have a larger population and we keep picking the samples, they will ultimately approach the normality. तो हम इस सैंपल को, ऑल्दो इसमें थोड़ा राइट स्क्यू है, लेकिन हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे अज्यूम करके सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बेस के ऊपर बैंक करते हुए हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करते हुए आगे बढ़ते हैं. And the various assumption, if we have enough evidence to assume equal variances between the two populations, we can use the pooled approach. हमने कहा था कि हमारे पास दो अप्रोचेस हैं कंप्यूटेशन के हवाले से, कॉन्फिडेंस इंटरवल की कंप्यूटेशन के हवाले से. एक को हमने पूल्ड अप्रोच कहा था और दूसरी को हमने अनपूल्ड अप्रोच कहा था. हमने कहा था कि पूल्ड अप्रोच हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा जो कह लें कि पॉपुलेशन के बारे में जो उनके वेरिएंस का एस्टिमेट है वो ये है कि दोनों वेरिएंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं या सेम है, राइट. अच्छा, अब हमें चूंकि यहाँ डायरेक्टली तो पता नहीं है कि पॉपुलेशन के अंदर वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, सो व्हाट वी डू इज कि हम सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन को देखते हैं. सो सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर आप देखें तो वी सी द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर मेल्स इज 6.24 and the standard deviation for females is 6.43.
So we say that they are roughly the same. They don't have a lot of difference or any huge difference. So based on what we observe in the available data, which is basically our sample and not the population, so we can assume that the variance is pretty much the same, and we can go ahead with the pooled approach in this case. Okay. So, interquartile range and the standard deviations are similar enough to make this assumption. So, we say that we will go ahead with the pooled approach in this case. So, pooled approach को अगर हम use करें तो हम क्या करेंगे? x1 bar minus x2 bar plus minus t multiplier और फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पूल्ड अप्रोच के लिए वहाँ पे लिस्ट किया था, राइट? सो यहाँ हम जो टी स्टार मल्टीप्लायर की वैल्यू यूज कर रहे हैं दैट इज 1.98 एंड दैट इज अगेन बीइंग कंजर्वेटिव. ओके. तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे प्लग इन करें तो जो इंटरवल हम कंप्यूट करते हैं मीन के ऊपर 23.57 मीन था मेल्स का, 22.83 मीन है फीमेल्स का, with the multiplier and then the number of samples in both and then the deviations for both, right? So जब हम ये compute करते हैं तो हमारा जो interval आता है वो basically -0.385 kg पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1.865 kg पर मीटर स्क्वायर तक जाता है, right? So now again I would expect you to interpret this confidence interval. So anybody who is going to give me a good statement on the interpretation of this confidence interval? No one? लोग मौजूद कितने हैं? There are 30 people, so nobody is going to say anything about it. जी जी बताइए. जी. हम्म. Yes. जी. जो बीएमआई में मीन डिफरेंस है, मेल्स और फीमेल्स के बीएमआई में जो मीन डिफरेंस है वो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर फॉल करता है जो कि है -0.385 से 1.865 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. सो वी कैन से दिस विद 95% कॉन्फिडेंस. हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ये बात कह सकते हैं कि जो मैक्सिकन अमेरिकन अडल्ट्स में से वो लोग जो 18 से 29 साल के हैं उनमें मेल्स और फीमेल्स के बीएमआई का एवरेज डिफरेंस जो है वो इस रेंज के अंदर फॉल करता है, राइट? इस इंटरवल के अंदर फॉल करता है. Yes, that's also noticeable कि इस इंटरवल में जीरो शामिल है इस बार. Okay, so now what we get out of this interval is, interval basically क्या होता है? That is the range of reasonable values for our parameter. So with 95% confidence, the difference in mean body mass index between males and females for all Mexican American adults in the US is estimated to be between -0.385 and 1.865. So, just iterating the same thing over and over again, what does with 95% confidence mean? That if this procedure was repeated over and over, each time producing a 95% confidence interval estimate, we would expect that 95% of those resulting intervals to contain the difference in population mean BMI. If you remember, तो ये बात एक बार हमने पहले भी कही थी, आज ये बात हम दूसरी बार कह रहे हैं कि 95% कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हम ये
प्रोसीजर बार बार रिपीट करें, राइट, और ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करें, तो जो हमारे केसेस आएंगे उनमें से 95% केसेस ऐसे होंगे जिन केसेस में हमारा इंटरवल, हमारी जो वैल्यूज होंगी वो इस इंटरवल में फॉल कर रही होंगी, राइट. This is a summary, just have a look at it. I'll be back in a moment. Okay, so you've gone through the summary now. Okay, so we will again take a little 5 minutes break and we will continue again, right? Okay, Ji, you can hear me now? And you can see my screen. Okay, so now we will be talking about हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सो अभी तक हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल तो कंप्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक किसी भी मेजरमेंट के ऊपर कोई हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं किया, राइट. सो वी विल नाउ बी हेडिंग टुवर्ड्स दिस hypothesis testing. Okay, so hypothesis testing, why do we do the hypothesis test? हम hypothesis test करते क्यों हैं? So what is your understanding? हम hypothesis test क्यों करते हैं? जी जी बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं. So why do we test the hypothesis? Okay, so like for example, we want to like test something like that. Could the value of some parameter be anything like this or that, right? So it's a kind of yes no question. It's a kind of hypothesis कि क्या इसकी value ये हो सकती है. So that can be like true with some significance, or that can be false with some significance, right? So how do we do that then? We use data to help support that claim. हम उस claim को data की मदद से support करते हैं कि data जो है वो हमें ये बता रहा है, so हम इस statement को क्या, इसके बारे में क्या assumption रख सकते हैं. So let's go with an example again with CS More Children Hospital, which conduct a national poll on an issue in children's health sleep habits. We will be looking at an example about the lack of sleep in the teens. So in the previous years, 52% of parents believed that electronics and social media was the cause of their teenagers' lack of sleep. सो पिछले सालों में 52% पेरेंट्स ये समझते थे कि सोशल मीडिया जो है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उनके बच्चों की कम नींद की वजह बन रहा है. डू मोर पेरेंट्स टुडे बिलीव दैट देयर टीनेजर्स लैक ऑफ स्लीप इज कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोशल मीडिया? क्या आज ज़्यादा पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि उनके बच्चों की लैक ऑफ स्लीप की वजह
इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया है या नहीं, राइट? सो सपोज दिस इज आवर रिसर्च क्वेश्चन. In this case, the population of interest is the parents with teenagers, which with like aging between 13 and 18. So that is our population of interest. And the parameter of interest is, what is our parameter of interest in this case? Can anybody tell what is our parameter of interest? Looking at जी कौन सी values? Just read through the research question and try to figure out what is the parameter of interest. रिसर्च क्वेश्चन को देखिए. G, anything about the parameter of interest? The parameter of interest is primarily the proportion, and on that proportion we are particularly interested the difference that has arisen in that proportion, whether that has increased significantly or not, right? So basically 52% पेरेंट्स ये समझते थे कि उनके पेरेंट्स की स्लीप हैबिट्स की खराबी की वजह सोशल मीडिया है. सो दैट वाज अ proportion, और आज हम ये कह रहे हैं कि क्या इस proportion में इजाफा हुआ है. So we are basically interested in that proportion, so we have represented that by P. So test for a significant increase in the proportion of parents with a teenager who believe that electronics and social media is the cause for lack of sleep. So हमें इस significance को टेस्ट करने के लिए basically अभी थोड़ा सा काम करना है. So we will be testing for significant increase in the proportion of parents with a teenager who believe that electronics and social media is cause of lack of sleep. So in the previous years it was 52%, and we need to see that as of now has it increased significantly or not. सो इन दिस केस हमारा जो कह लें हम इसे डिफॉल्ट हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस कह लेते हैं, दैट इज दैट द proportion of parents who believe that their children's sleeping habits are being disturbed by social media and electronics is 0.52, right? Because according to what we have in the background, 52% of the parents believe so, right? So based on that we can say that our null hypothesis assume this proportion to be 52%. That is the default, and we construct an alternative hypothesis as well, and in that we say that is the alternative value for P some different from 0.52, and in this particular case the symbol that should substitute this question mark is किस symbol को substitute करना चाहिए इस question mark को? We are basically asking a very specific question. स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन मार्क को किस सिंबल से हमें रिप्लेस करना चाहिए. So first P is this, and now what should be P? जी? So it should simply be replaced by the greater than sign. Is P greater than 52, यानी क्या proportion में इजाफा हुआ है? And is that somewhat significant? So that is what we are basically trying to test now. So our default hypothesis or the null hypothesis is this, that the 52% parents believe so, and the alternative is that there is some increase in that. Okay.
So where P is the population proportion of parents with a teenager who believe that electronics and social media is the cause of their teenager's lack of sleep, right? And the significance that we associate with this is 0.05. If you remember, तो जब हमने hypothesis के बारे में शुरू में बात की थी तो हमने बताया था कि हम कितनी significance उसके साथ associate करते हैं और कैसे करते हैं, right? So we take this sensitivity at that default measure that we had at that time, that was 0.05, right? Now, we did some survey, we collected some data, we got some results. So a random sample of 1018 parents with a teenager was taken, and 56% said they believe electronics and social media was the cause of their teenagers lack of sleep. सो प्रीवियस ईयर्स के सर्वे में हमें 52% पेरेंट्स ने ये रिपोर्ट किया था. अब जो एक फ्रेश सर्वे हमने किया इस पर्पस के लिए, इस रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, तो उसमें 1018 पेरेंट्स पे मबनी रैंडम सैंपल ने हमें जो प्रोपोर्शन दिया दैट वाज 56%. तो 56% पेरेंट्स ये समझते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया जो हैं उनके बच्चों की लैक ऑफ स्लीप की वजह बन रहे हैं. सो अपेरेंटली हम ये कह सकते हैं कि इस सर्वे के नताइज के मुताबिक जो प्रोपोर्शन था वो 52% से ग्रो करके 56% पे चला गया. सो इट हैज ग्रोन, राइट? ओके, नाउ वी नीड टू डू द फॉर्मेलिसिस. अब हमें वो फॉर्मल चीज़ें करनी हैं जो इस चीज़ को असेस करने के लिए ज़रूरी हैं, राइट? So assumptions are that we need a random sample of parents, and we say that yes, from the background we know that yes, we have like random sample from the parents. We also need a large enough sample size to ensure our distribution of sample proportion is normal, right? So ये बात भी हमें पता है, हमें मालूम है कि number of people in the proportion who say that yes, social media is causing this, that should be 10, and the number of people who believe no, it isn't causing them, that should also be 10, right? And in our case we know that we know these values from p naught, हमें p naught से इन values का पता है. So those are 10 and 10 in each, right, in each of the subgroups. सो रैंडम सैंपल है हमारे पास, प्रोपोर्शंस हमारे पास बिल्कुल ठीक हैं. अगर हम 1018 की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास 52% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है, सो वो 529 बनते हैं. और 48% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो 479 लोग बनते हैं, राइट? 89, सॉरी. ओके, so now, just to summarize again, that our null hypothesis is P is equal to 0.52. Our alternative hypothesis is that P has grown from 0.52, and our current best estimate for P, which is P hat, is 0.56. अभी जो हमने fresh data collect किया है उसके मुताबिक 56% पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स उनके बच्चों की लैक ऑफ स्लीप की वजह हैं. और हमें जो हाइपोथेसिस टेस्ट करना है उसमें हमें सिग्निफिकेंस लेवल जो मैयर करना है वो 0.05 रखा है हमने, राइट? नाउ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर दिस केस वुड बी बेस्ट एस्टिमेट minus the hypothesized estimate divided by the standard error of estimate. So we will be taking our best estimate, we will be subtracting the hypothesized estimate from that, and we will be dividing this difference with the standard error of the estimate to get our test statistic. So what is that? Best estimate is represented by p hat, and the hypothesized estimate is represented by p naught, and the standard error is represented by SE in our case, right? So we know the value of our best estimate. What is the value of a best estimate? P hat. Yes, sir. What is that value? That is 0.56. And what is the value for P naught? इसका मतलब है सब सो रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा. सुन रहे हैं, sir.
यार ये एक दो तो वैल्यूज थी, ये तो बंदे को वैसे ही अजबर हो जाती हैं हुसैन। ओहो। अच्छा चलिए मैं आपको दोबारा वैल्यू दिखा दूं। चलिए इस स्लाइड पे अब आप बताइए बेस्ट एस्टिमेट क्या है हमारा, और हमारा हाइपोथेसाइज्ड एस्टिमेट क्या है? 0.52। अल्लाह आपका भला करे। Okay, now the next thing is obviously we need to see what the standard error is. Standard error can be computed as the proportion into the not of that proportion divided by n, the square root of the whole. So this was the first example where they did for the construction of confidence interval, इसमें proportions measure कर रहे थे, right? अच्छा अब हमें p और 1 माइनस p तो पता नहीं हो सकते क्योंकि हम population level पे तो ये बातें नहीं जानते, लेकिन हमारे पास जो hypothesized values हैं वो ज़रूर exist करती हैं. So basically हम hypothesized estimate के हवाले से standard error compute कर सकते हैं for our best estimate. So that will be p naught into 1 minus p naught over n, the square root of the whole, right? So we can plug in these values here. हम null hypothesis की basis के ऊपर ये standard error निकाल रहे हैं, और जब हम ये values निकालते हैं so this turns out to be 0.56 minus 0.52 divided by 0.0157. So this the value for the standard error is p naught into 1 minus p naught over n, the square root of whole, and this expression turns out to be 0.0157. And when we compute this difference divided by this proportion, the standard error, the value for the z turns out to be 2.555. So now we have got a test statistic on our path to constructing the to the path for testing the hypothesis, right? So the value or the z score, so-called z score that we have got now is 2.555. What does it mean? ये जो हमने चीज measure की है या calculate की है, इसका मतलब क्या है? So basically, z equal 2.555 means that our observed sample proportion is 2.555 null standard errors above our hypothesized population proportion, right? So we are saying that this thing, just read this thing a couple of times and try to reckon what we are trying to say here. If you get it, let me know. If you have problems with it, let me know. तो एक्सप्लेन करेगा कोई? जी जी बताइए. राइट. जी जी. ठीक है. ठीक है. ओके ओके. आपने पहली बात ठीक कही. अच्छा देखिए, हम यहाँ कह रहे हैं कि आर ऑब्जर्व्ड सैंपल प्रोपोर्शन इज 2 हम ये लफ्ज़ छोड़ देते हैं, नल स्टैंडर्ड एरर्स छोड़ देते हैं अभी, ठीक है? हम समझते हैं ये नहीं है, नल स्टैंडर्ड एरर्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ. हम इस फिक्रे को नल स्टैंडर्ड एरर्स के बगैर पढ़ते हैं. तो ये फिक्रा क्या है? आर ऑब्जर्व्ड सैंपल प्रोपोर्शन इज 2.5 टाइम्स अबव आर हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. ठीक है? हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कौन सा है? जो पहले था, जो हमने नल हाइपोथेसिस में लिया था, जो ये कह रहा था कि 52% लोग ये समझते हैं, ठीक है? और हमारी ऑब्जर्व्ड सैंपल प्रोपोर्शन कौन सा है? जो करंट है, जिसमें 56% लोग ये समझते हैं, ठीक है? सो हम ये कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्व सैंपल है उसमें जो प्रोपोर्शन है और जो हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन था उसमें फर्क है, और वो फर्क है 2.5 टाइम्स का.
अच्छा, अब ये 2.5 टाइम्स के फर्क से क्या मुराद है? तो इसकी वैसे तो हमें ये मालूम है कि अगर हम 56 - 52 करें तो 4% का सादा सा फर्क है, राइट? लेकिन यहां हम कह रहे हैं 2.55, राइट? सो ये 2.55 टाइम्स का जो फर्क है उसका मतलब क्या है? दैट इज नल स्टैंडर्ड एरर्स. So what is that null standard error? That is basically computed here. ठीक है, सो बेसिकली आपने इसके डिफरेंस को नॉर्मलाइज किया है. ठीक है, आपने ये डिफरेंस लिया पहले 0.56 का और 0.52 का. आपने पहले ये डिफरेंस लिया और फिर उसको नॉर्मलाइज किया बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड एरर. सो नाउ यू से दैट जो आपकी ऑब्जर्व्ड सैंपल है उसमें जो प्रोपोर्शन है वो 2.55 null error times ज़्यादा है compared to the proportion that you had for the hypothesized population proportion. ठीक हो गया? Okay. Now that z-test statistic that we have just computed is another random variable and it has a distribution and it has a normal distribution in general, right? So the normal distribution is the one with the mean of 0 and the variance of 1. So z-test statistic will always follow a normal distribution and this is due to us centering and scaling our original data. So centering हम कहाँ पे करते हैं? जब हम p hat minus p naught करते हैं. So that's a kind of centering the data, right? That is basically just taking the difference of it, right? So, and basically when you divide it with that standard error, that is basically the scaling of the data, right? So in this case, like you're not getting the raw value, you first take the difference here and then you kind of normalize it by dividing it with this. Okay, and I think next class is lurking now. ये थोड़ा सा इसका रहता है. We will cover it up tomorrow. For both classes, the time will be the same from 3 to 5. And if there is like anything which can cause trouble, तो दोनों CRs मुझे time से पहले बताएंगे so that we can synchronize things accordingly. ठीक है?